Good morning, everyone. So, today we'll be covering the 2020 question paper, and I would like to let you know that this was the start of this prelims exam type pattern. So, इसके questions framing it's somewhat different than what we have nowadays. So, इसको ये pattern ही नहीं है, but for the purpose of revision and recalling, we'll just do it उसकी वजह से. So, 12 questions are there. Pattern वही है. So, coming to the first question. Correlation determines the age relationship between rock units और geological events. Rock units के बीच में relationship बता दिया, geological events के बीच में बता दिया, separate areas में. But the physical continuity, अब physical continuity के बारे में पूछ रहे कि इसका क्या scene है. तो पहला ऑप्शन है कि to trace physically the source of rock unit between two different places. तो physical continuity पूछा ये क्या होती है? Rock continu source of rock unit between two different places and correlation of two rock units according to the geological time scale. The lateral correlation of the rocks which are exposed in wide gap physically and the correlation of two rock units on the basis of their same physical and chemical character. So I will explain these all four options and then the answer. So to trace the physically the source of rock unit between two different places. So physical continuity क्या होता है? ये involve करता है कि एक rock unit को trace करना, उसके geologic features को trace करना between two different locations to establish a direct physical and connection. This method is used to confirm the same rock layer or geological event is extended from one area to another. So physical continuity क्या है? सीधा सीधा ये बता रहा है कि एक रॉक यूनिट है जो सेम उसकी जियोलॉजिकल फीचर्स है, उसकी जो प्रॉपर्टीज है, तो क्या वही सेम रॉक यूनिट जो है डिफरेंट एरिया में वो कंटिन्यू हो रहा है, जो कि हमें दोनों के बीच में एक डायरेक्ट फिजिकल कनेक्शन बताता है और इवेंट जो है वो एक्सटेंड करा है फ्रॉम वन एरिया टू अनदर. इंपॉर्टेंस क्या है? We are establishing the physical continuity that helps geologists understand the extent and origin of geological formation and ensures that correlation is made between two different locations are accurate. Now we have the explanation of other options. So the correlation of the two rock units according to the geological time scale. So it is somewhat incorrect for this because the process of stratigraphic correlation, this is called the process of stratigraphic correlation, which involves comparing rock layers edges on the basis of geological time scale rather than physically tracing them. Then the lateral correlation of the rocks which are exposed in wide gap physically. So it doesn't capture the sense of physically tracing the connection between two locations. And the last one is so the correlation of the two rock units on the basis of their same physical and chemical character. So this refers to the lithostratigraphic correlation. अगर आप किसी दो rock units के बारे में आपको इंफॉर्मेशन लेनी है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि क्या उनके फिजिकल और केमिकल कैरेक्टर्स सेम है, तो ये लिथोस्टैटिक कोरिलेशन होता है. सो कोरिलेशन स्ट्रैटिग्राफिक कोरिलेशन इज समवट इज द प्रोसेस जिसके अंदर आपके दो रॉक यूनिट्स अकॉर्डिंग टू जीटीएस उससे होते हैं. और सो स्ट्रैटिग्राफिक कोरिलेशन हो गया, लिथोस्टैटिग्राफिक कोरिलेशन हो गया एंड कोरिलेशन ऑन द नॉर्मल बेसिस लेवल. तो आंसर क्या हुआ आपका? आपका आंसर हुआ ए. Consider the following regarding a rock sample. So it's a normal, formula कि आपको age of the rock sample निकालनी है, which is determined by rock sample की age आप कैसे determine करते हो? T half life है. NP जो है वो parent radioactive substance present today number of atoms parent के number of atoms daughter के. तो इसका formula है ये वाला. So daughter के parents के साथ ratio और one में उसका addition. So this is the answer. Now third question. So in humid temperate climate, the rocks are weathered predominantly by a combination of both disintegration and decomposition resulting in the formation of. तो ह्यूमिड टेम्परेट क्लाइमेट तो इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी कि क्या टेम्परेचर और क्या कंडीशंस हैं जिसके अंदर रॉक जो है वो बहुत प्रीडोमिनेटली वेदर होते हैं, डिसइंटीग्रेट होते हैं, फिर डीकम्पोज तक होते हैं. तो ये इनमें से कौन सा है? सो आंसर है पोर्टजोल सॉइल. अब पोर्टजोल सॉइल के बारे में पढ़ते हैं कि ये पोर्टजोल हमें ह्यूमिड टेम्परेट क्लाइमेट में मिलता है जिसके अंदर फिजिकल डिसइंटीग्रेशन केमिकल डिकम्पोजिशन दोनों है. लीचिंग होती है भर भर के ऑर्गेनिक एसिड्स की, ठीक है, एंड डिस्टिंग मिनरल्स फ्रॉम द अपर लेयर्स क्रिएट डिस्टिंग लेयर्स विद एक्यूमुलेटेड ऑर्गेनिक मैटर आयरन एंड एल्यूमिनियम. सो दीज सॉइल्स आर टिपिकली एसिडिक. Podzol Podzol is typically acidic and distinct horizon of leach material alluviation and an accumulation of iron and organic matter that is alluviation. So कहने का मतलब ये कि Podzol soil हमें ह्यूमिड टेम्परेट क्लाइमेट में मिलती है और इसके अंदर बहुत वेजिटिंग होती है, लीचिंग होती है ऑर्गेनिक एसिड्स की और मिनरल्स की अपर लेयर से एंड देन इट क्रिएट्स अ डिस्टिंक्ट लेयर accumulated organic matter and iron and aluminium. Characteristic क्या है? They are typically acidic
and with a horizon of least material, alluviation, and an accumulation of iron, organic matter, alluviation. So alluviation and alluviation दोनों इसके प्रोसेस के पार्ट होते हैं. नाउ ब्लैक कॉटन सॉइल जो है उसको वर्टी सॉइल भी बोलते हैं, और ये सीजनल रेनफॉल महाराष्ट्र साइड इस सब तरफ बनती है, बेसाल्टिक रॉक से आते हैं. And through combined disintegration decomposition, it's not necessary. So basaltic rock, vertisol is black cotton soil, podzol is acidic, typically acidic, and it was a process of alluviation, and as well as we have the physical disintegration and chemical decomposition associated with podzol. Now lateritic soil जो है वो हमें ट्रॉपिकल में और हमें सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में मिलती है. इंटेंस लीचिंग होती है इसके अंदर, leaves behind iron and aluminium rich soil, तो somewhat रेड कलर की होती है, and it requires more consistent and higher temperature than humid temperate climate. So humid temperate climate तो हमें टेम्परेचर कुछ हद तक रेंज में, सेम रेंज में रहता है, लेकिन लेटेटिक सॉइल में हमें कंसिस्टेंट और हायर टेम्परेचर चाहिए देन ह्यूमिड टेम्परेट क्लाइमेट. सो इसलिए कुछ लोग इसमें और इसमें कंफ्यूज जाते हैं, तो वो मत होइएगा. नाउ वी हैव द सैंडी सॉइल. सैंडी सॉइल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सैंड साइज पार्टिकल्स. वेरियस क्लाइमेट्स में हमें मिलते हैं, सो दे आर नॉट रिलेटेड टू कंबाइंड प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन डिकम्पोजिशन इन ह्यूमिड टेम्परेट क्लाइमेट. सो पॉडजल से याद रखिएगा, एसिडिक, humid temperate climate. Okay, physical disintegration and decomposition is associated with it, and direct distinct horizon of leach material alluviation and accumulation of iron alluviation. So our answer would be podzol. So next, the molten spheroidal mass that Earth originally was started cooling with the result that a solid crust was formed over a molten core. The process of gradual release of previously dissolved gases in molten magma is called degassing, diagenesis, decomposition, and disintegration. So degassing is the answer. अब दूसरे प्रोसेस भी पढ़ लेते हैं, डीगैसिंग ही है. सो क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जब डिजोल्व गैस जो है वो एस्केप अवे कर जाती है आपके मैग्मा से, ठीक है, और ये डिजोल्व गैस जो है कैन हैपन ड्यूरिंग द वोल्केनिक इरप्शंस एज द मैग्मा कूल्स बीनीथ द अर्थ सरफेस. डीगैसिंग जो है वो क्रूशियल रोल प्ले करती है अर्थ के एटमॉस्फेयर की फॉर्मेशन में, और गैसेस लाइक वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड somewhat got released from the early molten earth. Now diagenesis is refers to the physical and chemical changes occurring in the sediments after their initial deposition. Decomposition is breakdown of organic materials, and disintegration refers to the physical breaking apart of rock material into smaller pieces, not the release of gases. So disintegration and decomposition में क्या है, it involves the breakdown of organic materials, and here is the physical breaking of the rock or materials. So yeah, बहुत ही माइन्यूट फर्क होता है इन सब के डेफिनेशन में, एंड वी जस्ट हैव टू keep in mind कि क्या है वो चीज. Now the volcanism of island arcs and continental margins erosions are associated with plate convergence. Okay, island arc and continental margin erosions, plate convergence हो रही है. Good. More extensive vast sheet of basaltic lava which have formed on the continents at various time in the past referred to as. तो पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव वास्ट शीट जो है बेसाल्टिक लेवा की जो कि फॉर्म हुई है उन कॉन्टिनेंट्स में वेरियस टाइम में, वो किससे रिलेटेड है? सो कॉन्टिनेंटल फ्लड बेसाल्ट, मिड ओशनिक लावा फ्लो, एंडेसिटिक लावा फ्लो, रायलिटिक लावा फ्लो. इट्स ऑफ कोर्स द कॉन्टिनेंटल फ्लड बेसाल्ट. सो कॉन्टिनेंटल फ्लड बेसाल्ट, volumes of basaltic lava, they have erupted over a short geological time frame covering extensive area of the continent, and they are linked to the mantle plumes hotspot rather than plate boundaries. So Deccan Trap in India, Columbia River basalt group in USA. Explaining the other one, mid oceanic lava flow. So ये basaltic lava flow होता है जो कि mid oceanic regions में होता है, new oceanic crust होती है. These processes associated with divergent plate boundaries, not the continental volcanism. So ये ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो गया. हमारे यहाँ पे फ्लड बेसाल्ट, इससे हमारे यहाँ पे बेसाल्टिक लावा से एसोसिएटेड है, बट इट इज एसोसिएटेड विद डाइवर्जेंस, एंड हियर इट इज एसोसिएटेड विद कन्वर्जेंस. नाउ एंडेसिटिक लावा फ्लो इंटरमीडिएट होते हैं कॉम्पोजिशन में, ठीक है, वोल्केनिक आर्क्स के लॉन्ग पाए जाते हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज में, आइलैंड आर्क्स एंड कॉन्टिनेंटल मार्जिन, बट दे आर इंटरमीडिएट. रायलिटिक लावा फ्लो हाई सिलिशियस कंटेंट होता है इनके अंदर, बहुत एक्सप्लोसिव होते हैं, नॉट एक्सटेंसिव एज बेसाल्टिक लावा एंड फाउंड इन कॉन्टिनेंटल वोल्केनिक सेटिंग. वोल्केनिक सेटिंग पे क्वेश्चन 100% आया है, सो इसको बहुत थॉरली आप पढ़िएगा, and there is something always new in it, so keep in mind you read from different sources as well. So coming to the sixth question, isostatic adjustment क्या है? So we have already discussed it कि जब आपके लैंड के ऊपर कोई लोड होता है, whether it's formed on the glacier or something, and with time it get melts, so this land gets uplift
because of the unloading of that material. So there is a vertical movement. So vertical movement यहाँ पे आ गई. Crustal rock tending to rise and sink gradually until they are balanced by the weight of displacemental rocks. Now other options are there. So let me just check. Have I done it? No. So yeah, that I think that's enough for the isostatic adjustment. Now, truncated spurs are the erosional landscape associated with valley glaciers. These are. अब truncated spurs क्या होते हैं? Always remember कि आपके पास हमेशा एक ऐसी टर्म आएगी जो कि आपको अननोन होगी और आपको उनमें से बताना कि वो कौन सी है, चाहे वो सिमा हो, होपफुली वो यही थी लास्ट वाले वीडियो में. सो देयर इज ऑलवेज अ टर्म लाइक दिस. नाउ जस्ट अ मिनट. या या सो ट्रंकेटेड स्पर पूछ रहा है क्या है, इरोजन फीचर्स है, पहले ही पता लग गया. तो लेट मी जस्ट. So C option. Lower part of the ridges that have been carved into triangle facets by geological or glacial origin, sorry, erosion. So क्या होता है? ये बोल रहा है कि ट्रंकेटेड स्पर जो है आपके ट्रायंगल फेसेट्स है जो कि ग्लेशियर इरोजन से कार्व्ड आउट हुए हैं, तो उन्हें हम ट्रंकेटेड स्पर्स कहते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है. और ये होगी आपकी हैंगिंग वैली. सो ये आपके लोअर पार्ट ऑफ द रिजेस में मिलते हैं, इरोड कर दिया गया ग्लेशियर से. ग्लेशियर जिनको कट थ्रू करता है, ये स्पर्स क्रिएटिंग स्टीप ट्रायंगुलर फेसेट्स दैट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मोर जेंटली स्लोपिंग इंटरफ्लूक्स ऑफ द रिवर वैली. मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सारी वैलीज ऐसी होती हैं तो बहुत ही ज्यादा ऐसे स्टीप तो होती ही नहीं है. इट्स लाइक ऐसे फिर हल्का सा ही हो, मतलब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द स्टीपनेस. सो इट्स लाइक दिस स्टीप. दीज आर द ट्रंकेटेड स्पर्स. दूसरे ऑप्शन की एक्सप्लेनेशन. So, sharp peaks that remain after cirques that have cut back into mountain on several sites. So, what I wanted to say is कि sharp peaks होते हैं, cirques के remaining content होते हैं, ठीक है? शार्प पीक्स यहाँ पे आ गई और सर्क्स का बचा हुआ जो पार्ट होता है उसको हॉर्न्स कहते हैं. शार्प माउंटेन पीक्स होते हैं जब मल्टीपल सर्क्स जो इरोड करती है माउंटेन को डिफरेंट साइड से. इट्स नॉट अ ट्रंकेटेड स्पर. Frost wedging on the rocks exposed over the glaciers, steepening and cutting backside of the valley. So this process is called the frost wedging. Roll and steepening valley was. It does not refer to the formation of truncated spurs. So ये तो frost wedging का ही definition है कि now steep-sided rounded hollow carved into a mountain at the head of the glacial valley. So it's a cirque, which is a bowl-shaped depression formed at the head of the glacier, not the truncated spur. So just a minute. Let me explain it more. हाँ, so आप देख सकते हो कि हॉर्न यहाँ पे ये है एंड सर्क. if the picture is clear, truncated spurs, if you can see over the guys कि कैसे इस माउंटेन की एकदम ट्रायंगुलर facets हैं. हैंगिंग वैली दिख रही है आपको. एरीड्स कुछ इस तरह से हैं. सर्क्स जो इनका बाउल शेप वो आ ही गया है एंड हॉर्न इज देयर. So yeah, it's like that only. So coming to the okay, so what was the answer? Sharp is have to circle back into this. It's called horn. Frost wedging on the rock. I expose steepling cutting back. No. So frost wedging here. Yes, lower part of the ridges that have been carved into. So yeah. Now, eighth question. The quantity of water which enters a stream channel in a drainage basin over a specific period of time can be calculated by. It's simple. It's water balance equation. Let me explain the other equations as well. So वाटर बैलेंस इक्वेशन क्या होता है? इनफ्लो डिटरमाइन करता है आउटफ्लो, स्टोरेज कितना रह गया एक ड्रेनेज बेसिन में स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे. और इट अकाउंट्स फॉर ऑल द फॉर्म्स ऑफ वाटर इनपुट लाइक इट्स प्रेसिपिटेशन, इवेपोट्रांसपिरेशन तो आपका आउटपुट हो गया, रन ऑफ भी, एंड स्टोरेज इज द सॉइल मॉइस्चर एंड ग्राउंड वाटर. सो दिस इज अ जनरल वाटर बैलेंस इक्वेशन वेयर इज P is precipitation, evapotranspiration. Precipitation is equal to evapotranspiration runoff and the change in the storage where storage is done in the form of soil moisture and groundwater. एक्सप्लेनेशन ऑफ अदर ऑप्शन. चैनल स्टीपनेस इक्वेशन क्या होता है कि एक आपका चैनल है उसके अंदर हमें बताना है कि कितना स्टीप है, कितना उसका ग्रेडियंट है, जो कि वाटर की वेलोसिटी को बताएगा हमें. और इससे कोई वाटर की क्वांटिटी एंटिंग स्ट्रीम से कुछ उसे उसका मेजर कोई लेना देना नहीं है. स्ट्रीम लेंथ ग्रेडियंट इक्वेशन क्या होती है कि ऐसी इक्वेशन होती है जो कि रिलेशनशिप बताती है लेंथ ऑफ द स्ट्रीम एंड इट्स ग्रेडियंट बट इट डज नॉट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर द सेम. Now, Darcy is just describe the flow of the fluid through a porous medium. So it's used in hydrogeology, and the whole point over here is hydrology. So yeah.
सो वाटर बैलेंस इक्वेशन. नाउ नाइन क्वेश्चन, क्रेवासेस क्या होता है? So, margins of the glacier in place where the path is curved, bedrock by the marking of boulders that are dragged at the base of the ice sheet, grinding of the rocks into powder of fine fragments of the silt and clay size, and marking on the form of scratches by the sharp corner of the rock fragments. So, let me explain it for you. So, margins क्या होता है? क्रेवासेस जो है हमें पता है कि ये आपकी अगर आइस वो है ना, आपकी कोई आइस बॉडी है कुछ भी है, सो एक ऐसा डीप क्रैक होता है, बहुत खतरनाक सा, उसको क्रेवासेस कहते हैं. इवन इवन आप ऐसे अगर आप ऐसे भी बैठे हो ना और आपके पीछे ग्लेशियर है, सो उसके अंदर भी ऐसे डीप क्रैक कुछ इस तरह से अंदर जाता है 3D व्यू में. सो या सो डीप क्रैक्स होते हैं, ग्लेशियर्स में बन जाते हैं. And they develop along the margins of the glacier where ice is moving and experiencing tension. So there is a tension between that iceberg. So एक दूसरे से move away कर रहे हैं. So they are, doing it in a curved path. So as the glacier flows, the ice at the center moves faster than the edges, causing these cracks to open up on the side. Now explanation: bedrocks by marking of the boulders that are dragged at the base. So this प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लेशियल एब्रेशन, जिसके अंदर आपके जो बॉर्डर्स हैं वो ड्रैग आउट हो रहे हैं आइस शीट के बेस में, जिसकी वजह से वो स्क्रैचेस और मार्क्स आ रहे हैं. ग्राइंडिंग जो होती है रॉक की into fine fragment of silt and glacier, so it's glacial floor formation. ये प्रोसेस इसका है जिसके अंदर फाइन पार्टिकल्स जो है वो बन जाते हैं रॉक के by the moving glaciers. Now marking of the rock in the form of scratches by sharp corner of the rock fragments, तो it's called glacial abrasion ही, ये भी वही है, rock fragments by the glacial scratch to bedrock. Okay, so our answer would be margins of the glaciers in the place where the path is curved. Now, the threshold flow velocity at which the particles sit due to the channel bed is known as fall velocity, increasing, decreasing. It's called the fall velocity, of course. So, for more clarity, fall velocity क्या होता है? इसको settling velocity भी बोलते हैं, जिसके अंदर ये बताता है कि पार्टिकल जो है किस स्पीड से सिंक आउट हो रहा है फ्लूइड में, कब वो सेटल हो रहा है आपके बेड पे. तो क्रिटिकल कंसेप्ट है स्टेडिमेंट ट्रांसपोर्टेशन का, डिपोजिशन इन रिवर चैनल का, दूसरी वाटर बॉडी का. इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, रन ऑफ. सिंपल सी बात है कि प्रेसिपिटेशन हुई है, आपका लैंड हुआ, तो किस हिसाब से जो है पानी जो है आपकी लैंड पे रन ऑफ हो रहा है. एंड इट्स नॉट रिलेटेड टू द पार्टिकल सेटलिंग इन द चैनल. So fall velocity. Now, second last question. Padelford is a type of soil in the wet climate. Now, see, you have the one question on the soil over here and another question on the soil again. So soil, clay minerals, clay rocks, and this different terms, geomorphological terms, and this abrasion and all, attrition, abrasion, deflation, etc. Now, पेडेल्फर क्या है? पेडेल्फर एक सॉइल है वेट क्लाइमेट में, और ये कैसे फॉर्म होती है ये पूछ रहा है. So coming to the explanation only. So yeah, पेडेल्फर जो है वो एक इफेक्टिव डाउनवर्ड लीचिंग होती है हाई रेनफॉल और एसिड्स की, प्रोड्यूस बाय द डिके ऑफ अबंडेंट ह्यूमस. तो एसिडिक के भी हो गया, हाई रेनफॉल के साथ इसका एसोसिएशन कर दो और डिके कर दो ह्यूमस का. So these are characterized by the formation with the high rainfall, which leads to the effective downward and leaching. So decay of abundant humus acids further results enhance the leaching process, results in iron-rich and aluminium-rich oxides, and poor in calcium and magnesium. Okay. Now, explanation of the other option: upward movement of soil water beneath the land surface, characterized by little leaching, scant humus. So this describes the condition of arid or semi-arid environment, leading to the formation of soils like pedicles, not pedelfers. Now, podzol, pedicles, and pedelfer, podzol. ठीक है, pedelfer, pedocles. Podzol से हमें पता है कि highly acidic, humid, temperate environment. Pedelfer is high rainfall, acidic, and rich in iron and aluminium, but poor in calcium and magnesium. Now, when it is associated with semi-arid environment, it's pedocles. Now, cementation of clay particles, silica and iron compounds that have accumulated in the B horizon. So this refers more to the process of soil horizon development, not to the leaching process. And intense deep weathering in the tropical region where silica disintegrates into clay or mica. So it's the characteristic of the lateritic soil. ट्रॉपिकल रीजन जहाँ पे आ गया, इंटेंस और डीप वेदरिंग यहाँ पे आ गया, सिलिका का डिसइंटीग्रेशन यहाँ पे आ गया, वहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन होंगे. तो पेडेल्फर तो ऐसे एरिया में मिलता है, ऐसे एरिया में लेट्रिटिक सॉइल मिलती है. सो an effective downward leaching due to high rainfall, acids produced in the decay of abundant humus.
Now, last question. Abrasion is a process that can mechanically weather rock. Okay. So, क्या है और इसकी property? Solvent action of water which attack in mineral structure for disintegration. Disintegration of rock mass by the process of frost weathering. Exposing fresh country rock to surface to do the removal of their overlying weathering material and grinding away of rocks by friction and impact during transportation. So I know the answer, but let me explain to you. So let me explain the ABC first. So, solvent action of water which attack in mineral structure for disintegration. This tells us about the hydrolysis. वाटर आपके मिनरल स्ट्रक्चर को अटैक करती है फिर उसको ब्रेक डाउन करती है तो उसको हाइड्रोलिसिस कहेंगे. डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक मासेस बाय फ्रॉस्ट बेजिंग. तो क्या होता है कि जब आपके फ्रीज थॉ साइकिल्स होते हैं सो वाटर आपके क्रैक्स में एंटर हो जाता है एंड इट फ्रीजेस एंड एक्सपैंड्स इट कॉजेस द रॉक टू ब्रेक अपार्ट. Now exposing fresh country rock to the surface due to removal of their overlying weathering material. So this process is called unloading and exfoliation, where there's a removal of overlying material. So it reduces the pressure of underlying rocks and causing them to expand and fracture. Talking about abrasion, abrasion involves a physical grinding, wearing away of the rock surface by the friction and impact of particle transported by the wind and water. It's a process that smooths and polishes the rock sediments and they contributing significantly to mechanical weathering. So grinding away rock by friction and impact during transportation. That would be our answer. Yeah. So with this, I will just end up the physical geology series, and now we'll be covering the another subject. Most probably, it will be the structural geology. And thank you so much. And I hope you guys share it to the people who are really interested to know more.